Hello dear students, in this video we are going to do differential equations. Some solved examples which are important for exam point of view. So that examples we are doing in this lecture. So here x dy by dx is equal to x tan of y upon x plus y. This is solved example, we are doing it. This example is on homogeneous differential equation. So while solving homogeneous differential equation, we put y is equal to what? Vx. Therefore, dy by dx is equal to what? V plus x into dv by dx. So here dy by dx is equal to v plus x into dv by dx. V plus x into dv by dx. V plus x into dv by dx. Right hand side is x plus tan of y upon x. So as y is equal to vx, so y upon x will be v. तो यहाँ पे रहेगा v plus this y is equals to what? Vx. Then from both sides ये x cancel कर सकते हैं हम. So that you are getting here, यहाँ पे मिलेगा आपको v plus x dv by dx, v plus x dv by dx is equal to tan v plus v. ये v again we cancel v from either side. So what you will get? X dv by dx. Okay, x dv by dx is equal to what? Tan of v. Tan of v. Now write in variable separable form. So dv upon tan v, dv upon tan v, that is equal to what? Dx upon x, dx upon x. So dv upon tan v is dx upon x. अभी we will integrate this. Here 1 upon tan v is what? Cot v. dv is equal to integral dx upon x. Integral cot v is what? Log of sine. Okay, integral cot x is log of sine x. So it is log of sine v, that is equal to log of x plus c, constant of integration will write is log x, log c. Then log sine v, log sine v is equal to log of x into c. Therefore sine v is equal to what? X into c. Sine v is equal to x into c. But what is v? V is equal to what? Y upon x. Therefore sine of v is y upon x is equal to what? X into c. Yes, thus we are getting the solution. Next is dy by dx is equal to y plus root of x square plus y square upon x. Next question, dy by dx is equal to, here dy by dx is equal to y plus root of x square plus y square. Again it is homogeneous differential equation upon x. So we put y is equal to vx. Therefore dy by dx is equal to v plus x dv by dx. v plus x dv by dx.
So make this substitution over here. dy by dx is what? Yes, v plus x into dv by dx, or right hand side y is equal to what? Dx plus root of what? X square plus y square is v square x square आएगा बेटा, upon, see here, upon denominator is what? X. Here y equals to vx and whole upon x. So v plus x into dv by dx is equal to, यहाँ से हम x कॉमन लेते बेटा, v प्लस रूट ऑफ, यहाँ पे x कॉमन लिया है, मतलब स्क्वायर रूट से x स्क्वायर कॉमन लिया है, 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन what? X, so that this x is getting cancelled. ये x कैंसिल होगा, so what you will get here? v plus x into dv by dx is equal to v plus root of 1 plus v square. Then this v is getting cancelled. So after cancelling this v, क्या मिलेगा अभी? x dv by dx is equal to root of 1 plus v square. अब इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखते, dv अपॉन, here we'll write it in variable separable form. So how we write in variable separable form? dv upon root of 1 plus v square is equal to dx upon x. ये x और dx इधर चला आएगा और dv upon root of 1 plus v square. But now we integrate this. So integration dv upon root of 1 plus v square is equal to integration dx upon x. So what is this integration? Integral dx upon root of x square plus a square is log of x plus, मतलब v plus root of 1 plus v square is equal to log of x और प्लस c डैश, मतलब log c आप लिख सकते हैं इसमें. हाँ, then here it is log of लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बेटा? log of v plus root of 1 plus v square, और राइट हैंड साइड log x plus log c, you can write as log of x into c. So we equate them. तो यहाँ पे हम ये log नहीं लिखेंगे. So v plus root of 1 plus v square is equal to what? X into c. But our substitution is what? Y is equal to vx. So v is equal to y upon x. यहाँ पे हम लिखेंगे y upon x, v equals to square root of 1 plus v square, मतलब y square upon x square, that is equal to what? X into c. Okay, then here LCM will be what? LCM, see here, y upon x plus square root of x square plus y square upon x square, and that is equal to x into c. So here LCM is what? X. The square root of x square मतलब x, यहाँ पे y plus root of
x square plus y square, and that is equal to x into c. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल गिव अस, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, that is equal to x square into c. Yes, done. This will be the general solution of the differential equation. This will be the general solution of the differential equation. dy by dx is equal to y plus root of x square plus y square upon x. Substitution है y equals to vx. It is a homogeneous differential equation and this will be the answer. Then next question. Here we will do question on the differential equation which are reducible to the variable separable form. The differential equations are reducible to the variable separable form. Let's attempt this second question, that is dy by dx. ओके बेटा, dy by dx is equal to 4x. यहाँ पे we substitute and we reduce it to the variable separable form, plus 1 whole square. Okay, so what we will make a substitution, 4x plus y plus 1, you will substitute here u or v. So let u is equal to 4x plus y plus 1. Okay, then du by dx will be equal to what, du by dx, that is equal to 4 plus dy by dx, 4 plus dy by dx. Therefore dy by dx is equal to what, therefore dy by dx is equal to du by dx minus 4. So what we are doing here, this dy by dx we are finding, so du by dx minus 4. तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4x plus y plus 1 is equal to u, और dy by dx is du by dx minus 4. So what we will get, dy by dx is what, du by dx minus 4, and the right hand side is equal to u square. So take this 4 in the right hand side, so du by dx is equal to, ये 4 हम राइट हैंड साइड में लेते हैं, 4 प्लस यू स्क्वायर आएगा बेटा. अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे, du अपॉन व्हाट, यू स्क्वायर प्लस 4 is equal to what, dx. Now it is in variable separable form, we integrate it. इंटीग्रेट करेंगे इसको, du अपॉन यू स्क्वायर प्लस 4 is equal to dx integral. So this integral is 1 upon a, मतलब 1 upon 2 tan inverse of x upon a, मतलब u upon 2, and right hand side is x plus c. Integral dx is x and plus it is c. So it is tan inverse of u by 2 is equal to 2x. Let's say it is c dash, so it will be 2x plus 2c dash. So 2c dash we can write here c, and finally we'll write here c. Up tan inverse of u is what, 4x plus y. What is और u क्या है बेटा, 4x plus y plus 1, 4x plus y plus 1, okay, upon 2 is equal to what, 2x plus c. Yes, this will be the general solution of the differential equation. This will be the general solution of the differential equation. Now we will do this first question.
first sub question is here 1 plus dy by dx, 1 plus dy by dx is equal to cosec of, is equal to what? Cosec of x plus y. So here ये x plus y आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, x plus y is equal to u. Therefore du by dx will be equal to 1 plus dy by dx. अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 1 plus dy by dx ही है, so in place of that we can write du by dx. Therefore du by dx is equal to cosec of u, is equal to what? Cosec of u. Then इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे. So we'll write it in variable separable form. So du, हाँ ये कोसेक मतलब क्या होता है बेटा? 1 अपॉन साइन यू होगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू साइन यू इंटू डी यू इज इक्वल टू व्हाट? dx. फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ साइन u du is equal to integration dx. Therefore it is minus cos u is equal to x plus c. But what is our u? U is equal to x plus y. So therefore we write here x plus, ये c जो है आप c डैश लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में ले सकते हैं, और दैट वी कैन राइट x प्लस cos ऑफ u is equal to what? x plus y, and that is equal to what? c. This will be the general solution of the differential equation. We will do now exercise 6.5. इसमें कुछ क्वेश्चन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना है. सो वी विल सिलेक्ट ओनली दोज क्वेश्चंस विच वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हैविंग स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy by dx. Slope of tangent to the curve at any point xy is equal to this 9 minus 4x upon 9y. So what is given over here? हमें slope of tangent मतलब dy by dx. Yes बेटा, dy by dx. This is given. It is equal to how much? Minus 4x upon 9y. Okay, minus 4x upon 9y. So dy by dx is this minus 4x upon 9y. अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड से करेंगे. सो यू कैन सेपरेट दिस वेरिएबल्स dy और ये y इधर आएगा बेटा. 9 भी हम लिख सकते हैं इधर, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 4x इंटू dx. हाँ, अभी इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड से सॉल्व करेंगे. सो दैट इज 4x dx प्लस 9y dy is equal to what? 0. Now integrate this. 4 into integral x dx plus 9 into integral y dy, that is equal to what? C dash. That is equal to C dash. Now 4 integral x dx is what? X square by 2. 9 integral y dy is what? Y square by 2, or is equal to what? C dash.
ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c डैश, और ये c लिख सकते हैं हम, 2c डैश इज इक्वल टू व्हाट c। अब कंडीशंस दिया है इसमें, सी दिस इज व्हाट जनरल सॉल्यूशन, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल टू, यस बेटा, x इज इक्वल टू 3/√2 और y इज इक्वल टू √2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जो है कांस्टेंट c का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, सो दैट विल गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो हियर 4 इंटू x, x is what 3/√2 square, 9 into y square, y square is √2 square, that is equal to what c. So this will be equal to 4 into 9/2 plus 9 into 2 is equal to c आएगा बेटा। So this will be, ये 2 is getting cancel, it is 18 और प्लस 18 36 होगा बेटा, ये भी 18 होगा। So c will be equal to what 36। Therefore इस इक्वेशन में हम c is equal to 36 रखेंगे, so that the equation of curve we can write as, therefore equation of curve, therefore equation of required curve is what 4x square 9y square is equal to c, c मतलब 36। इसको रिराइट करेंगे x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। यस, दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हाँ, हियर फोर्थ क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू यूज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते हैं हम बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड। सो लेट्स डू फिफ्थ क्वेश्चन। See what is this fifth question here? If slope of tangent मतलब dy by dx, okay, this is slope of tangent to the curve at any point, at each of its point is equal to sum of abscissa means x coordinate and the product of abscissa and ordinate, this plus product of abscissa and ordinate, ठीक है, abscissa and ordinate, okay। Also find the curve passing through this point 0, 1, find the equation of curve। Here this is the differential equation। अभी इस differential equation को हमें solve करना है, तो यहाँ पे हम x कॉमन लेते हैं बेटा, 1 प्लस वाई आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज dy बाई dx, और हाँ, अब dy बाई dx वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आएगा इसका, dy बाई dx, सॉरी dy अपॉन 1 प्लस वाई आएगा, और राइट हैंड साइड क्या आएगा बेटा, x इंटू dx। यस, वी इंटीग्रेट दिस dy अपॉन 1 plus y is equal to इंटीग्रल x into dx। सो फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, log of 1 plus y, इसका इंटीग्रेशन आएगा log of 1 plus y, that is equal to x square by 2 plus c constant of इंटीग्रेशन। अब c फाइंड करने के लिए हमें c also curve passes through this point 0, 1, तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू एज इट पास थ्रू 0, 1, तो x इज इक्वल टू 0 रखना होगा और y इज इक्वल टू 1 रखना होगा, सो दैट यू विल गेट वैल्यू ऑफ c। सो हियर वी पुट x इज इक्वल टू सी हियर log ऑफ 1 प्लस दिस इज 1 इज इक्वल टू, ये 0 है बेटा, प्लस c
therefore you are getting here log of 2 is equal to c और c is equal to log 2 इस इक्वेशन में हमें रखना होगा. therefore log of 1 plus y is equal to x square upon 2 plus log 2 plus what? log 2. okay, plus log 2. c is equal to what? log 2. थ्रू आउट इक्वेशन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, सो 2 log ऑफ 1 plus y is equal to x square plus 2 log 2 आएगा. 2 log 2 में log 4 मतलब log 4. therefore it is log of 1 plus y whole square is x square plus log of 4. सिंप्लीफाई करते हैं log of y plus 1 whole square divided by 4 is equal to x square. so y plus 1 upon 2 whole square is equal to e raised to power x square. y plus 1 whole square is equal to ये 4 आएगा बेटा. दिस इज व्हाट 4 into e raised to power x square. so it is the equation of curve. this is the equation of curve. so thus we have completed 2 questions which we can solve by using variable separable form method. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के ये 2 क्वेश्चंस है 2 and 4. so here we have completed some important solved examples on differential equation which are important for exam point of view. and this exercise 6.5, here linear differential equations is from the deleted portion, so therefore we have not done question number 2 and 4. so thank you for watching this video.